corrupt हो गया पूरा. So I created a new lab then. So PXE, there is a tab for PXE. We check this button. Right. You can read this. It is saying that client computer are using the following ports to connect to this site system server. Okay, UDP port 67, 68, 69, 4011. 4011. 4011 will check what it is. Operating system installation is over the port UDP port 69. 68, 67 and 68 is used by the DHCP to listen. 68, I think it is used by the DHCP. And 67 is port 67 is 67, 67 या 68. 67 पे listen करता है. 68 I am not sure, but DHCP is listening on the port 67, and WDS is also using the same port. ठीक है. If you use the Windows Defender firewall on this server, configuration manager automatically configures rules to allow these ports, and it is saying, are you sure you want to enable the PXE boot? I will say yes. I will do yes, but let me just discuss few options first. It says deploy Windows deployment services will be installed if required. So we will be doing it with the WDS only. So there is a service which is called Windows Deployment Service, and this is needed uh, for the PXE. It provides it's a service. Basically, we can enable it from the server manager as well. So it's like a WSUS and the IIS. There is a server manager where we can इंस्टॉल इट. अगर ये फेल होता है, यहाँ से फेल हो जाता है अगर ये, तो वी कैन डू इट फ्रॉम द सर्वर मैनेजर एज वेल. Exactly what does WDS does? WDS has its Windows deployment services. I mean, it provides the files and the environment for it supports. I mean, it supports the this OS installation process. It's a role actually. I will show you in the server manager. Windows deployment services, this one. So as you can go through the description, it says Windows deployment services provide a simplified, secure means of rapidly and remotely deploying Windows operating system to computers over the network. Okay. Right. So it's just a rule basically, but SCCM, like SCCM is using WSUS right from this server rules. It is using IIS, and that in the same manner it is also using this Windows deployment service. So it is used for deploying the operating system over the network. Okay, बट Okay. हम यहाँ से इंस्टॉल नहीं करेंगे. हम यहाँ से बस ये एक ऑप्शन चेक करेंगे. ठीक है, और इसको यस कर देंगे. अभी क्या है, अभी हम ये थोड़े ऑप्शन है यहाँ पे. अलाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट टू रिस्पॉन्ड टू पिक्सी इनकमिंग रिक्वेस्ट, वी विल अलाउ इट. So if there is any request from any machine for PXE boot, it will allow it. Right. In future, if we do not want this PC has this DP has some wrong configuration, we can uncheck it, and this machine will not respond. This DP will not respond for PXE request. ठीक है. अलाउ करना या नहीं करना है पिक्सी रिक्वेस्ट के लिए, ये वो ऑप्शन है. वी विल अलाउ इट. एनेबल अननोन कंप्यूटर सपोर्ट. अननोन कंप्यूटर मतलब which is not there in SCCM, which is not there in SCCM database, that will be unknown computer. ठीक है, जो डेटाबेस में नहीं है वो अननोन हो जाएगा. सो वी विल चेक इट. अदरवाइज वी हैव टू import the machine manually.
ये क्या कह रहा है? इफ यू एनेबल अननोन कंप्यूटर सपोर्ट, एनी अननोन कंप्यूटर दैट यूज पिक्सी इनिशिएटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट विल अटेम्प्ट टू रन रिक्वायर्ड टास्क सीक्वेंस। सो ये कह रहा है कि अगर कोई भी मशीन अननोन है और वो पिक्सी इनिशिएट करती है, तो इट विल स्टार्ट द task sequence process, and it will start, partitioning disk, formatting, which can destroy the data. So a kind of warning है, we said okay, ठीक है। enable a pixie responder without deployment services, ये भी एक ऑप्शन है। ये यूज होता है वैसे विदाउट पिक्सी रेस्पॉन्डर, आई मीन विदाउट डब्ल्यू भी हम कर सकते हैं पिक्सी बूट, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो आई ऑलवेज डू इट विद विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, बट मैं इसके बारे में थोड़ा देखूंगा। आई विल लेट यू नो हाउ वी हाउ वी डू इट Okay. विदाउट डब्ल्यू। और फीचर्स क्या क्या मिलते हैं इसमें, क्या इसके बेनिफिट्स हैं ओवर डब्ल्यू इफ वी डू, इफ वी एनेबल पिक्सी रेस्पॉन्डर। सर पहले वाले ऑप्शन के बारे में बताना एक बार। ये नीचे सेकंड। ये हाँ ये। सेकंड वाला, हाँ ये ये तो ये कह रहा है अलाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट टू रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग पिक्सी रिक्वेस्ट। मतलब अगर कोई मशीन इस डीपी से कांटेक्ट करती है ना पिक्सी बूट के लिए, तो ये इसको अलाउ करता है या नहीं करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्सी बूट से तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ना किसी मशीन पे। हाँ, तो वो रिक्वेस्ट तो करेगी ना। अभी जब मैं फ्लो तो सर बताऊंगा ना। मैं यही हाँ नहीं हम्म ठीक है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जैसे मशीन पे कुछ अभी इंस्टॉल है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो रिक्वेस्ट कैसे कर देगी वो तो। मशीन जब एक नेटवर्क में ऑन होती है ना, हाँ तो वो हाँ ब्रॉडकास्ट करती ही करती है। जैसे तुमने देखा होगा, हम जब ये कनेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाइंग लिखा आता है ना, हाँ तो एक मशीन जब भी नेटवर्क में आती है ना, इट विल ब्रॉडकास्ट अ मैसेज, इट लुक हाँ। फॉर। नहीं मैं समझ गया ठीक है। लेकिन सर जब मेरी उस मशीन पर ना तो वो डोमेन से कनेक्ट है, कुछ है ही नहीं, मतलब तो वो हाँ, जीरो कुछ ही है, नहीं तो है, फिर वो। लेकिन उसके बाद भी वहां पर एक नेटवर्क कार्ड तो है ना, तो वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है। नेटवर्क कार्ड जो होता है उसका, हाँ हाँ जब एक मशीन ऑन होती है ना, या उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करती ही करती है कि इफ़ देयर इज़ एनी डीएचसीपी, वो आईपी के लिए, मतलब जब मशीन बूट होती है, इट विल लुक फॉर द आईपी। तो उस टाइम के लिए जब वो ब्रॉडकास्ट करती है और उसको एक डीएचसी मिल जाता है, ये वो रिक्वेस्ट का है। वो आएगा अभी सर पिक्सी एक रिक्वेस्ट। हाँ एक चीज़ नहीं आ रही बस मतलब समझ में, कि मतलब जैसे कोई मशीन मैंने इंटरनेट कार्ड उसमें लगा हुआ ठीक है, मैंने उसमें कनेक्शन भी लगा दिया इंटरनेट का ठीक है। अब हम्म मैंने वो स्टार्ट कर दी, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन फिर वो यहीं पे क्यों आएगी रिक्वेस्ट, वो तो इंटरनेट पे चली जाएगी। वो नहीं जाए, इंटरनेट पे नहीं जाएगी। वो मैं बताऊंगा अभी कैसे होगा। पोर्ट से होता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट पे ही वो अपनी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करती है। वो मैं फ्लो में बताऊंगा अभी। जी। अभी सिर्फ सेटिंग्स में देख लो, ये सारे ऑप्शन वहां पे दोबारा आएंगे, ठीक है। तो इसका हम्म मैं देखूंगा एनेबल पिक्सी रेस्पॉन्डर विदाउट डब्ल्यूडीएस सर्विस। इसका थोड़ा मेरे को टाइम देना पड़ेगा। हम्म। ज़्यादातर मैंने इसी से किया है हर बार, तो इसका देख के मैं बताऊंगा। पासवर्ड, पिक्सी का पासवर्ड कोई हम सेट नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगा कि कौन सा पासवर्ड है, या सेट कर लेते हैं तो वो आएगा, तो फिर हम वहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। पिक्सी का पासवर्ड रख लेता हूँ मैं। आई थिंक सिंपल पासवर्ड ही एक्सेप्ट कर लेगा। पासवर्ड यू हैव, आई थिंक 1 2 3 4 भी एक्सेप्ट कर लेगा। कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ इशू तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 पासवर्ड मैंने डाल दिया। रिस्पॉन्ड टू पिक्सी रिक्वेस्ट ऑन ऑल नेटवर्क इंटरफेस, रिस्पॉन्ड टू पिक्सी रिक्वेस्ट ऑन स्पेसिफिक नेटवर्क इंटरफेस। तो ऑल कर देता हूँ फिलहाल मैं लैब के लिए। So, the task sequence password is different from this account, correct? Yes, this is not the account password. When we select the task sequence, right, it will ask for this Pixie password. So we have to put in the password, then only it will execute the task sequence. So this is the task sequence password only, 1234. Yeah, or we can say it's a Pixie password. Without this, Pixie boot will not complete. Basically, while the boot image files gets downloaded,
there is Hmm. some account password needs to be there. That is different from this one. Boot files. I'm not sure. There is only one password. If we uncheck this, it will not ask for any password. Mm, We will it will see. We not will see ask, but when we do it on the lab. You can let me know where. Currently, yeah, I'm sure, not sure. getting. Okay. Okay. So we have set the password. We have enabled. I click on OK. So once we click on OK, we have to check. We have enabled it on distribution point. So we will check log for distribution point. Which log फिरोज कौन सा लॉग देखेंगे डीपी के लिए डिस्टम जी आर सर। तो पिक्सी के लिए भी वी विल चेक द सेम लॉग ठीक है अभी इट इज गोइंग ऑन सम प्रोसेस इज गोइंग ऑन एग्जिटिंग प्रोसेस एंड ऑल सो There is one more log, SMS PXE. It's from client end. that will come when Pixie in the Pixie process. We have now just enabled the this Pixie. We have just enabled it. Okay. It is not working as of now. So once the Pixie starts, see it is not. It is now trying to run this command and it will install the WDS. Right. It will create one this folder C remote install. So these are the things we need to check. It might fail when we enable the Pixie, it might fail installing this WDS service. Right? It says WDS not started, then it will create all these folders. So it is because we check this option, हमने option check किया था ना कि ये WDS भी install करे. So it is right now installing the WDS for us. This option. Windows deployment services will be installed if required. So it is installing the WDS server, creating these folders, SMS boot, temp, inside remote install. Successfully created the virtual directory. It also created one virtual directory. Uh, Physical path $6, but $6 was already there. I think it is completed. So we enable the Pixie boot and it created one folder in C remote install. This folder. This folder has the files. ठीक है इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स होती हैं which is needed for the Pixie boot. So we will check this boot folder x64. These are the four files which will be needed for x64 machine. For 32-bit, these are the files. ठीक है there are fonts which will be needed while the Pixie boot. Okay, and SMS stamp, store, SMS boot, SMS boot also. This is boot SDI which is needed. These are the fonts again. This is for x64 and so this is for x86. सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे ये इंटरनेट पे पूरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे कोई विंडोज की सर पूरी फाइल हमने डाउनलोड करी थी वो फाइल नहीं सेंड करता बस ये उसको कमांड दे रहा कि हाँ ये डाउनलोड कर लो और नहीं ये इसको सारी बूट कर लो। फाइल्स डाउनलोड होंगी हाँ नहीं उसको मशीन को तो बस ये कमांड दे रहा ना वो तो डाउनलोड तो वहीं से करेगी ना फिर इंटरनेट से। नहीं नहीं इंटरनेट से नहीं करेगी यहीं से करेगी ये सारी जो बूट फाइल्स है ना हाँ ये सारी यूज तो होंगी वो ऑपरेटिंग तो वो सिस्टम जो सर हमारी डिप्लॉयमेंट के लिए 6 GB वाली फाइल थी वो सेंड करेगी ये इसको उसको हाँ मशीन पूरी को। 6 GB की फाइल वो अभी आएगा सब ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट पैकेज
बनता है एक, वो सब सेंड होगा ओवर द नेटवर्क। जितना बड़ा बूट फाइल होगा और जितना भी ओएस की इमेज इमेज फाइल होती है सब जाता है ओवर द नेटवर्क ही जाता है। 11 जीबी तक डेटा जाता है ओवर द नेटवर्क। सो सारा डेटा will go over the network only. Nothing is downloaded from the internet. हम्म ठीक है। तो अभी अभी तक बस इतना देखो, वी enabled the Pixie boot, right? When we enable the Pixie boot, we have to check distemgr. Distemgr will show that it has created the WDS service. WDS service is started and created the remote install folder. अभी तक बस इतना। ठीक है, these are the files, boot files which help the machine to do the Pixie boot। ठीक है, this one SMS boot, these files should be there, fonts x64 x86 boot.sdi। ठीक है, अब इन फाइल्स का सबका एक एक काम है। अबॉट पिक्सी, ठीक है, और बूट मैनेजर, पिक्सी बूट, WDS NBP, everything is there। I mean they all have some kind of particular reason है इन सब फाइल्स का। ठीक है, अभी क्या करते हैं, सर, अभी जैसे जो बूट बूट से उससे पोर्ट से कनेक्ट होने के बाद मशीन पे सबसे पहले जो बूट फाइल जाती है वो कौन सी होती है, जिससे मशीन को पता चल जाता है कि हाँ मुझे यहाँ से पूरा ओएस डिप्लॉयमेंट होना वो है यहाँ चलो से। मैं पहले फ्लो बता देता हूँ, उसके बाद ये मैं सिर्फ अभी फाइल्स दिखाना चाह रहा था कैसे एनेबल करते हम्म हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, फॉन्ट्स हैं, और ये यहाँ पे रिमोट इंस्टॉल फोल्डर में होती हैं। ठीक है, एक चीज़ और, उसके बाद फ्लो देखते हैं। ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, हमने वो एनेबल कर दिया, पिक्सी बूट एनेबल्ड है, और ऑल फाइल्स आर प्रेजेंट इन SMS बूट। ठीक है, इनका पर्पस आई विल लेट यू नो, अभी फ्लो में आएगा वो भी, जब मैं फ्लो बताऊंगा इसका। एक चीज़ और, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, बूट फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, boot images। So we have two boot images for x64 and x86। These boot images should be distributed to DP। अभी distributed नहीं है, right? So ये distributed होनी चाहिए, अगर distributed नहीं है Pixie boot will fail। और ये सर आई कहाँ से दोनों बूट इमेज ये? हमने ADK इंस्टॉल किया था ना, हाँ। ADK से ये अपने आप जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने आप क्रिएट करता है। सो इसीलिए हमने ADK इंस्टॉल किया था, क्योंकि ये बूट इमेजेस अपने आप SCCM वहाँ से क्रिएट कर लेता है। इसका एक पाथ भी होता है, सी प्रोग्राम फाइल्स, ADK कहाँ पे, जहाँ पे ADK इंस्टॉल होता है ना, वहाँ पे ये फाइल्स, वहाँ से ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है। x86 में होता है आई थिंक, विंडोज किट 10, ये मेरा ADK 10 है। असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट किट, डिप्लॉयमेंट टूल्स, आई थिंक डिप्लॉयमेंट टूल्स में x86 इसमें देखते हैं, वो एक्चुअल फाइल का एक पाथ भी होता है, वहां से ना वो फाइल आ जाती है। ये होगा विंडोज प्री इंस्टॉल एनवायरनमेंट x86 ENUS, ये देखो WinPE। हम्म With this win file, winpe.wim file, it creates this boot image। तो एक करता ना, दो कैसे कर दी इसने, मतलब 64 की भी और दोनों कर दी और करता है, 32 वाली भी कर दी? दोनों करता है। क्योंकि मैंने अपने एनवायरनमेंट में देखा तो उसमें एक ही है 64 वाली। वो इसलिए है क्योंकि जो नया वाला वो है ना, एडीके। नए ADK, उसमें वो एक ही बनाता है। मैंने पुराना वाला डाला अपने लैब में, तो तुम्हारा भी मैं पुराने वाला डलवा दूंगा, क्योंकि अगर एक होगा ना तो चलता नहीं है, हमें दोनों चाहिए होती हैं बूट इमेजेस। या मैं फाइल दे दूंगा ये वाली x86 वाली, बस तुम बूट इमेज क्रिएट कर लेना। सो वी नीड बोथ। पहले एक से ट्राई करना, एक से नहीं होगा, हम्म दोनों चाहिए, इसीलिए मैंने हम्म पुराने वाला ADK एक था मेरे पास पुराना, वो मैंने डाला।
तब मेरी ये दोनों ऑटोमेटिकली बन गई। हम्म। वो मैं बता दूंगा अभी। हाँ, तुम्हारे में एक ही आई होगी क्योंकि मैंने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल कराया था। जी। मैंने ओल्ड वाला ईडीके इंस्टॉल किया था, मेरे लैब में दोनों ऐसे थी। ठीक है। Enabled the WDS distributed both the boot images. Boot images are coming from ADK. This is the path AMD ARMS 86 and 64 ENUS. Media has some files and WinPE OCS. It also has some files, but with this WinPE, these boot images are created. We can create a custom boot image also. If we do add boot image, and we need to give the vim file. It is asking for file.vim, right? Same way, like this is the winp.vim. If there is any custom boot image you want to create, you can create it with this. If you have any vim file, you can create a custom boot image. ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट टू बूट इमेजेस हैं, तुम्हारे में वन एक ही है। लेकिन हम कस्टम बूट इमेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अभी इतना हो गया है। So we'll be going through custom boot image also later. Custom boot image, I will let you know how we can create one. Okay. Yeah, it is Because in it my not. environment they are using custom boot image with the Mm-hmm. drivers inclusion, some default applications, and Uh-huh. some things are there. I don't know how they'll be adding all those in the custom boot We image. can inject the drivers, like you go here, it is not that difficult. There is the driver packages. If you have the driver packages, like you have to first create these we have to create the driver packages here, and drivers Yeah, in the driver driver package package. creation, I know, but how to include that in the boot image, I never tried. Then you can go to this driver and then just add it here. It will show the driver packages. If you want to select Oh, all, and then it will be included, it will be injected to the boot image. But I think right oh, now that process is also not followed. There is something different which is they are following, but we can do this also. If you want to add oh, include the okay. drivers, we can create the driver package, go to properties and just select it here, and it will show. Okay. Okay, apart from drivers and applications, what are all things we can include in boot image Driver in the customer? applications, I think that's it. Drivers and applications, rest GPU, and they come up when machine is fully active. Okay, okay. So we will now cover Okay, the. the provisioning screen and all, they are different, right? They are configured through MDT, na? The provisioning Yeah, screen and all. MDT has, I mean, it's fully dedicated to this deployment only, right? So Mm. it has all the tools. I mean, most of the tools, I would say it comes through the MDT only. So MDT has more customizable options. Mhm. MDT the task sequence created with MDT. Mm. Okay, I will now explain the flow. This was the basic diagram. We have enabled the PXE. Okay. Need to enable the PXE on DP. We have distributed the boot images also. So then we have to also create the task sequence and all. But we will do it later. We have to set up one DHCP server also. Then it will work. Right.
So I will now show you the flow. Okay, heading is PXE flow. Okay, and so like we have all did all the arrangement, we have to do some more, but we will do it. But the process is like when machine starts, like every infra is ready, and we have connected the LAN cable to the machine, and we switch on the machine, we switch on the laptop or a desktop. Then first thing it will do, it will broadcast. Okay, client client will broadcast one message and look for the IP. Client will broadcast matlab it will send, it will broadcast a message not upon a particular port, but to the network. But in this case, font ठीक है ना, ये बड़ा करूँ? फॉन्ट इज ओके और थोड़ा बढ़ाना है? बढ़ा लो सर थोड़ा सा, वैसे तो कोई वो भी नहीं है, जगह तो है ही अपने पास। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इंक्रीज नहीं हुआ, इसका बढ़ क्यों नहीं रहा है? पता नहीं, बढ़ नहीं रहा है यार फोन। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन विल कम एज क्लाइंट will broadcast on port 67। ठीक है, 67 इसीलिए क्योंकि WDS जो है वो WDS and this DHCP, they both work on port 67, I mean they are listening on port 67। ठीक है, so if there is any request which is coming from on this port 67, it will this DHCP वो उसको वो करेगा, रिस्पॉन्ड करता है DHCP। ठीक है, so client will broadcast on port 67 along with option 60। फिरोज माइक का बहुत साउंड आ रहा है यार। एक सेकंड। Client will broadcast on port 67 with option 60, that means अगर इतना होता है that means DHCP will know that it's a PXE boot request, so that DHCP will know that it's a PXE boot request and machine is looking for the IP। ओके, अब सेम पोर्ट पे ही WDSP करता है रन, इसीलिए DHCP और WDS सेम पोर्ट यूज करते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ DHCP एंड WDS यूज सेम पोर्ट 67, so WDS and DHCP
cannot be on सेम सर्वर। तो पिक्सी का और ये जो एनवायरनमेंट होता है, इसमें DHCP एंड WDS जो हमने कॉन्फ़िगर किया है इस पे SCCM सर्वर पे, WDS रूल जो हमने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुआ है वैसे, दे बोथ यूज पोर्ट 67 एंड कैन नॉट बी ऑन द सेम सर्वर। अगर होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो पिक्सी काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि DHCP is listening on port 67, DHCP is listening मतलब ये इस पोर्ट को मॉनिटर करता रहता है। DHCP is listening या monitoring this port 67, और अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है इसके पास तो इट विल प्रोवाइड द IP। ठीक है, is listening on port 67 for IP। अब IP का जो प्रोसेस होता है ना DHCP का, वो होता है डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस का मतलब होता है रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, डी से क्या होता था, डोरा प्रोसेस पता है क्या? अब बाहर का, डू यू नो डोरा प्रोसेस? DHCP is the it's a process by which DHCP provides the IP address to a machine। No, I'm not aware of it. ठीक है, ये बेसिकली ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, डी से क्या होता है डोरा प्रोसेस, लेट मी जस्ट चेक। डिस्कवर। हाँ, डिस्कवर, राइट। तो इसका प्रोसेस का मतलब होता है डिस्कवर, मतलब मशीन विल डिस्कवर the DHCP server like it is broadcasting on port 67, so it will discover. Once machine is discovered, the this IP address, sorry, this DHCP server will offer it one IP. It will offer the IP. ठीक है, once it is offer, machine will check if it can have that IP or not. So if the IP is okay, machine will say that IP is okay, it will request for the same IP which is offered. And if it is not okay, then machine will reject it, then DHCP will offer the another IP। ठीक है, once it is requested, this DHCP will provide the IP and machine will send a message acknowledge that okay, I will acknowledge this IP। ठीक है, तो ये होता है डोरा प्रोसेस। इसमें हैंडशेक वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस डोरा प्रोसेस, this process WDS will also verify its files। ठीक है, तो जब तक ये डोरा प्रोसेस और ये सब चल रहा है, दिस WDS will verify its all the files in this folder, रिमोट इंस्टॉल का जो फोल्डर है, यहाँ पे WDS will check if all these files are created or not। If any file is missing, x64 or anything is missing, this IP will not be provided। It's verify its files if WDS not configured properly, IP will not be offered and PXE will fail। ठीक है, तो DHCP ने डोरा प्रोसेस फॉलो किया। बाय द टाइम WDS ने अपनी फाइल्स चेक किया, अब WDS में कुछ इशू है, तो ये DHCP से IP नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज DHCP waits for confirmation of WDS। ठीक है, वंस
WDS says okay, then IP is provided. ठीक है. Once WDS is okay, that means all files are present. DHCP will offer the IP to machine. ठीक है, मशीन को आईपी मिल गया. अभी तक बस इतना हुआ है. यहाँ तक पूछो, कोई क्वेश्चन है तो. Um, I did not understand exactly how the process is going on. So initially, the unknown machine, let's take a fresh PC which it doesn't have any operating system in it. That machine was connected to a LAN cable and it has MAC ID. The client device. We are going to boot environment. I mean, we are going to boot the machine, and once we click on that start PXE or IPv4, it's going to release the packets. Am I correct? Yes, once machine is on the network, it will broadcast on port 67 for the IP. Okay, what are those packets? Once we click on start PXE or IPv4, it's going to release packets. What are those packets? It's I'm not sure about those packets actually, but there is some messages or packets going on the port 67, and DHCP is just listening. It's a request for the IP. So packets, So, what is there in the packets, that actually it's, I think it's only a request over the network. okay, Actually, some packet what consists, I am not sure about it. I think we are not even concerned about what is inside the packet. It's just a request going on over the network. Okay, once we clicked on Start PXE or IP4, the client devices broadcast the DHCP packets, let's say DHCP packet, and Yeah. now the DHCP server receives those packets from the client device, and as those packets have been received from port 67, then the Yeah. DHCP will be able to DHCP will, understand. yeah, DHCP understand that it's a port 67. Also the option 60. Option 60 means it's a PXE boot request and machine is looking for a IP. It will broadcast on port 67 with this option 60. I mean, in the packets it will set this option 60 also. Okay, otherwise, if we have, where should we configure this option 60? Because it's a fresh PC, we will not be able to configure in client device. Option 60 Then, is a by default PXE option. I think you cannot configure it like by default. DHCP is listening on port 67. If there is any another port, then our network team should let us know that. I'm not sure about we can change it or not, but by default DHCP is listening on this port 67 only. So if there is any change, so, network team should share it. no, I mean, where do we configure this option 60 as well in the port That 67? will on the DHCP. I will show you. Okay. We will. If we have configured option 60 in the DHCP server level, then the client device will be broadcasting only the DHCP packets on port 60. So, I mean, port 67. Then there is nothing from the client device that it's option 60 confirmation, right? Am I making sense or? Not getting completely. From the client end level, there is nothing special request that it has received along with port 67 with the details of option 60.
Yeah. then how the DHCP will be able to understand that it was regarding exactly the PXE with the option 60, as it was not anything configured from the client end level. Uh-huh. Did I question sound correctly? You mean we have not configured anything on this Client end machine, level. right? But there is a option Yeah, 60 yeah, correct, correct. How that DHCP server will be able to understand that the request was with the option 60 only. because that will be because DHCP is also there, right? Was sorry, this we have configured the PXE boot in the environment, right? Okay, So so that's why as we are when machine is booting over the network and it is trying to you know get the IP, so I think that sets the option 60. So you mean to say that we need to configure in the DHCP server level for that port, especially 67 with option 60. Otherwise, uh, it will not be able to send the acknowledgement of IP There, address yeah, there to is, file there level. is, there are options. I think we have to set it. I will show in the DHCP when we'll configure the DHCP. I will show you this option. I think it will be there. Okay, great. Okay. Last time I configured, there are few configuration we have to give the path of the file WDS NBP. I will let you know how to do it. But as of now, just try to understand it like a theory part. It is like Okay. whenever there is a like we are doing a PXE boot, machine will broadcast a message on port 67 with option 60, right? So that it gets to know that it's a DHC will get to know it's a PXE boot request. And Okay. So once it has received the DHCP package request, then the DHCP server will be able to understand that it's a PXA request. Now the task is to allocate the IP address. Before yes, that, it's going to check with WDS whether all the prerequisites of are there or WDS not? files. Yeah, Okay, that communication, how it's going to take, because um, WDS server detail, location details, and all will be because they available both in are DHCP. listening on the because they're both listening on this port 67. So DHCP also gets to know that DHCP and WDS they both gets to know that there is one client, and DHCP Mm, is also listening on port 67. WDS is also listening on port 67, right? So they both gets mm. to know that there is a machine looking for the IP. If everything is okay, because WDS also sends one signal that files are okay. Once that signal is okay, then only the IP will be assigned. Okay, that acknowledgement will be DHCP by WDS. Yeah, there's some kind of green signal we would say, or some kind of confirmation is there that files are okay from Yeah, the WDS. WD from WDS to DHCP, right? Yeah, Okay, and then only it will allocate IP address. then only it will. But that communication, how that green signal or the that signal is sending, that even I have no such information on the blogs also, right? They because Oh, these flow this is there on some of the blogs and online Microsoft tutorials, but how that is going on, that is something I think which is much more deep dive, but it is not mentioned anywhere. But yes, the process is mm, that it will wait for the green signal from the WDS. If it is green signal means it will check these files. If these files are okay, then the IP will be allocated to the machine okay. So WDS we are going to configure in site server only. on the DP. It can be on DP where Okay, it's a remote DP, or it can be any DP. Not not a site server, but we do it on the DP.
It's a DP configuration. Oh, Okay. So okay. next thing, moving forward, सर next एक thing सेकंड, is, हाँ, अब हिंदी वाले वर्जन में सर मेरे इसमें एक दो सवाल है। हम्म, पहला तो ये है कि जो डीएचसीपी या एनवायरनमेंट का डीएचसीपी और जो इंटरनेट का डीएचसीपी अलग है या एक ही है? नहीं ये हमारा लोकल कन्फिगर्ड है। तो मतलब ये तो हमारा एससीसीएम साइट वाला हो गया इंटरनेट का डीएचसीपी, कौन सा ठीक है। डीपी होता है? इंटरनेट का कौन सा डीपी? डीएनएस होता है। तो डीएचसीपी साइट सर्वर का ही होता है बस ये। हाँ लोकल ही होता है, इंटरनेट का कोई डीपी थोड़ी होता है। हाँ, मतलब इसको सर ठीक से इंटरनेट का समझने के लिए एक मतलब बार वो मैं। होता है, वो हाँ। डीएचसीपी वो होता है जो पब्लिक आईपी देता है। बाकी तो हाँ। हमारा तो इंटरनेट जो है वो राउटर से चल रहा है, राउटर आईपी दे रहा है हमारा तो पब्लिक डीएनएस तो होते हैं, लेकिन पब्लिक डीएचसीपी तो आई थिंक नहीं होता। एक पब्लिक आईपी तो मिलती ही है, राउटर को मिलती है वो तो। अच्छा सर ठीक है, मैं तो समझ गया, ठीक है। दूसरी बात सर ये, जैसे मैंने मशीन में सर वो लाइन केबल लगा दी, ठीक है। हम्म। और तो फिर उसको ये कैसे पता चल रहा मशीन को कि मतलब मैं इसे एनवायरनमेंट में ऑन कर रहा हूँ या फिर इसको मैं वैसे ऑन कर रहा हूँ? यार हमारा ये सब कॉन्फ़िगर्ड है ना एनवायरनमेंट में, डीएचसीपी हमारा नहीं, जैसे सर कॉन्फ़िगर्ड है। मेरा मेरा एक लैपटॉप है। चलो ठीक है, हम्म। थोड़ा सा मैं एक बार प्रैक्टिकली ये चीज समझ लूँ ना, बस एक स्टार्टिंग की। वो मशीन को कैसे पता चल रहा है कि मतलब ये मैंने एनवायरनमेंट में ऑन करी है? मैंने तो बस एक लैन केबल लगाई और ऑन कर दी मशीन, फिर वो जब इंस्टॉलेशन शुरू हो जब ये जाएगी। सारा प्रोसेस करते हैं, मशीन बूट करती है ना, तो वो ये सब देखती है, अपने आप ही सर्च करती है एनवायरनमेंट में कि ये आईपी कहाँ से मिल सकती है ना? ये सब चीज़ें, एक एनवायरनमेंट, एक नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए मशीन को आईपी तो चाहिए ना। हाँ ठीक है। अगर तुमने उसमें केबल लगाया है, तो मशीन तो हम्म। जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेगी। आइडेंटिफाई मतलब इट विल लुक फॉर द आईपी। हाँ ये भी ठीक है। तो वो जो मैंने लैन केबल लगाया वो मेरा मतलब एनवायरनमेंट का लैन केबल है क्या? वो इंटरनेट जो आ रहा है उस लैन केबल में वो एनवायरनमेंट सारा? जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क होता है ना, वो यही होता है। जो जैसे ऑफिसेज का नेटवर्क होता है, हाँ। वो किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे, हर नेटवर्क पे पिक्सी बूट नहीं होगा। तुम लैन केबल लगाओ पिक्सी बूट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ सर किसी मैं वही तो एक, पूछना चाह रहा हूँ। अरे यार मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर हाँ। तो किया था ना अभी। कहीं भी पिक्सी बूट हो जाए ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे ही पिक्सी बूट होता है, लेकिन वो मशीन का हम एक जनरल सिनेरियो ले रहे हैं ना इसमें। ये देखो यहाँ पे, रिस्पॉन्ड टू पिक्सी बूट रिक्वेस्ट टू अ स्पेसिफिक नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ पे हम वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि जैसे तुम्हारी कोई टीम है, मतलब तुम्हारी कोई सपोर्ट की टीम है, सिर्फ वही उसी नेटवर्क पे अगर मशीन है तो ही पिक्सी बूट होगा, नहीं तो हर मशीन पे पिक्सी बूट, हर नेटवर्क पे पिक्सी बूट नहीं होगा। लेकिन अभी ये जनरल सिनेरियो है, ठीक है, जहाँ पे बस मैं अभी फ्लो बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम अभी देखेंगे आगे। ठीक है। सर इस फ्लो में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये फ्लो तो मतलब ठीक है, बिल्कुल ओके है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखा हर एक चीज, ठीक है। हाँ। लेकिन बस मुझे वो समझ नहीं आ रही, जैसे मैंने 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 एक वाईफाई लगाया अपने घर में हम्म। और मैंने उसके वाईफाई राउटर से निकाल के एक लैन केबल अपने पीसी में लगा दी और ऑन कर दिया मशीन को। हम्म। तो अब उस मशीन को कैसे पता चल रहा है ये क्या? तो कि राउटर, मतलब। Okay. राउटर से क्या मतलब है? राउटर वहां पे तुम्हारा डीएचसीपी, ये Okay. डब्ल्यूडीएस, ये थोड़ी कॉन्फ़िगर्ड है। तो सर Okay. मुझे यही तो समझ नहीं आ रही, मतलब वो मशीन को कैसे पता चल रहा है कि मतलब ये एनवायरनमेंट सब इसमें इंस्टॉलेशन होगी? तुम पहले, So, may I answer to that? हाँ हाँ हाँ, भार्गव। So, basically, routers are configured to the client device, right? So, in that router level end, there are IP helpers configured. So what will that IP helper does is it contains the your PXE server address or DP server address to contact which DP server to download your boot image files or the task sequence details from which DP server needs to be downloaded. So when you configure in the IP helper at the router, so when the client device requests the DHCP, then that IP helper which was configured in the router level, it will get try to reach that particular DP server or PXE server. जी सर एक बार आप बताना सर, इनकी लैंग्वेज मतलब क्या बोल रहा है ठीक से। अरे अभी ना भार्गव, ये आईपी Yeah, हेल्पर, डीएचसीपी,
Firoz will not understand. He's not from the IT background actually. So that's why I'm not discussing the IP helper as of now. IP helper is if your this I mean DHCP Multiple or PXEs. yeah, there this is a big environment, and your this DHCP is in another network. I mean, it's not in the same subnet; it's in the different subnet. So, Mm, in order to jump from one subnet to another subnet, you need a IP helper, right? mm, Because machine will broadcast in its subnet only, right? We cannot jump into another network for that packet. If you want that packet to jump into the another network, another subnet, we use the IP helper, right? But as of now, I'm taking the general scenario. We are not going any through the IP big. helper, but Okay. I will let you know if uh, we will configure it, IP helper, or we'll do it through DHCP configuration. फिरोज मैं तुम्हें बता दूंगा अलग से, अभी तुम फिलहाल इतना ही समझो कि ऐसा हो रहा है बस, ठीक है, एक कहानी की तरह, लाइक अ स्टोरी। नहीं नहीं, उसके बाद तो फिर मुझे पूरा ठीक से समझ में आ रहा। एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हम प्रैक्टिकल भी हाँ करेंगे, एकदम से हर चीज समझ में नहीं आई ऐसा जरूरी जी नहीं। जी ठीक है। ठीक ये है। तो मुझे फ्लो तो समझ में आ रहा है ठीक से पूरा। हाँ, तो अभी चीजें ऐसे ही काम कर रही हैं। अभी ऐसे ही समझो कि इट्स लाइक अ स्टोरी और अ थ्योरी पार्ट वी हैव टू हम्म अंडरस्टैंड लाइक या इट इज हैपनिंग दैट वे। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए, व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग। बट एकदम से हम्म सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसीलिए थोड़ा ये एडवांस टॉपिक इसीलिए कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये comes in the SCCM थोड़ी एडवांस टॉपिक्स, सो इट नीड्स सम अंडरस्टैंडिंग। एक बार फ्लो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करें, उसके बाद तुम अपना क्वेरीज नोट डाउन करते रहो। कुछ चीज़ें जब हम फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं या थ्योरी कर लेते हैं ना, उसके बाद कुछ चीज़ें अपने आप भी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, जी आज फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं, कल तक हम देखते हैं प्रैक्टिकल करेंगे इस पे। ठीक है, अभी क्या है, अभी तक ऐसा समझो कि ओके, WDS इज फाइन, DHCP इज फाइन, मशीन रिसीव द IP एड्रेस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड now, there is uh, one what we call, there is one stored procedure which will run now. Stored procedure is some kind of, like, it's a procedure which is stored in the SCCM database, so it will run. There is no I mean ऐसा कोई नहीं है कि why it is running, how it is running. It's a stored procedure, so it will run whenever it finds that machine has received the IP and we are going for a PXE boot, right? So this name of the stored procedure is MP underscore lookup device stored procedure. ठीक है, it will run, and what it will do, it will check, stored procedure will run, and it will check if machine is known or unknown. Okay, known or unknown means known machine is which is there in my console, which is there in the SCCM database. ठीक है, this one is known machine. For unknown machine, by default SCCM have these two collections: unknown machine x64, unknown machine x86. So during PXE it will use these collection, right? These are the by default collection for unknown computers, right? So stored procedure will check if a machine is known or unknown. Okay, Yeah. and then information will come that, for example, machine is unknown. ठीक है, we will doing the unknown part. So let's say machine was unknown, machine information is received. Then there is one file which is WDS NBP, which will be sent to machine for architecture detection.
this one. This is a MS DOS application file. There is no OS, right? But MS DOS, this MS DOS application can be file can run even if there is no OS, right? So this file will go to wdsnbp.com. This file will do architecture detection. ठीक है? If the machine is unknown, like with mp underscore lookup device, we get to know that machine is x64 or exit is, I mean, sorry, unknown or known with mp underscore lookup device. Now it is x64 or x86 that will be detected by this wds nbp file. ठीक है? ये डिटेक्ट हो गया, मशीन अननोन है, अननोन इससे, नॉन और अननोन एमपी लुकअप डिवाइस से, और आर्किटेक्चर वेदर इट इज x64 और x86 or x86, that will be detected by this wds nbp file. Okay, and yeah, it will use the protocol, one download protocol also, tftp protocol. It's on the tftp protocol 4011, the port which I was saying why it needed. This 4011 is needed for this PXE boot. TFTP is trivial file transfer protocol which need no acknowledgement over TFTP. Okay, it's a file transfer protocol. Then there is another stored procedure which will run, and it's a get boot action. Another stored procedure will run, which is get boot action. Get boot action means it will check if there is any deployment on the machine or whether the deployment is available or required. ठीक है? Stored procedure get boot action will check if the deployment if deployment is available or required, और रिक्वायर्ड. अब ये डिप्लॉयमेंट किस चीज का है? डिप्लॉयमेंट है टास्क सीक्वेंस का. इट्स अ टास्क सीक्वेंस डिप्लॉयमेंट, एंड डिप्लॉयमेंट वी कैन डू एज रिक्वायर्ड और अवेलेबल. तो अभी कोई टास्क सीक्वेंस हमने यहाँ बनाया नहीं है. वी विल क्रिएट वन और वी विल डिप्लॉय इट टू द कलेक्शन. वी कैन डिप्लॉय इट टू अननोन एज वेल. ओके, अननोन कलेक्शन. So एक stored procedure here no get boot action will check if the deployment is available or required. अगर if required, machine will download pixieboot.com. pixieboot.com यहाँ पे एक फाइल होगी, ये वाली फाइल, दिस वन pixieboot ms. इसका एक्सटेंशन मैं देख लेता हूँ, कुछ होगा इसका. डाउनलोड हिडन फाइल नेम एक्सटेंशंस, हाँ, pixieboot.com. ठीक है, wdsnbp.com ये है, pixieboot.com ये है. अगर डिप्लॉयमेंट अवेलेबल है तो इट विल डाउनलोड pixieboot.com. इफ रिक्वायर्ड, अगर डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है तो इट विल डाउनलोड pixieboot.n12 करके एक फाइल होगी.
pixieboot.n12, otherwise it will download this file. ठीक है, pixieboot.n12.com है क्या है, जस्ट pixieboot.n12 not .com. ठीक है, this will check if the deployment is available or if required. हाँ, available और required, if available होना चाहिए यहाँ पे, available के केस में it will download this pixieboot.com, required के केस में it will download this file.com. अगर यहाँ तक IP से लेके यहाँ तक if the pixieboot fails, then it downloads the abort pixie.com and inform this I mean it will inform that pixieboot is aborted, और लॉग्स वगैरह में सब में वो रीजन आता है कि डाउनलोडेड abort pixie.com. if task sequence fail if task sequence I'm sorry pixieboot fails, अगर ये प्रोसेस फेल होता है, नॉट अ टास्क, अभी टास्क सीक्वेंस पिक्चर में नहीं आया, इफ pixieboot fails it will download this abort pixie.com. .com है क्या है, abort pixie.com, yeah, abort pixie. Basically these files, these are the just files it will download and using for this process. Boot mgr is boot manager, wds for detection, pixieboot.com for available deployment, pixieboot.n12 for required one. ठीक है, अभी इतना हो गया, अभी सिर्फ मशीन को डिप्लॉयमेंट मिला. ठीक है, इतना, ये मतलब बहुत सेकंड्स में चेक हो जाता है इतना कि pixieboot n12 है या क्या है, अवेलेबल है या नहीं है, फर्स्ट पेज पे ही ये सब चेक हो जाता है बहुत सेकंड्स में. मतलब हम प्रैक्टिकली करेंगे ये सारा काम जो इतना बताया ना अभी, ऐसे 1 सेकंड में हो जाएगा, 1-2 सेकंड में सर सारा एक काम बार हो ये जाएगा. सर ये DHCP ने जो उसको आईपी दे दी, एक बार बस यहाँ से रिपीट कर देना. एक बार मैं पूरा कर लूँ, मतलब अब टाइम कम बचा है, अच्छा उसके बाद ठीक मैं है. बता दूंगा, एक बार फ्लो पूरा हो ठीक है. जाए उसके बाद. ठीक है, हम्म हम्म. ठीक है. अभी क्या है, अभी डिप्लॉयमेंट लगा हुआ है, डिप्लॉयमेंट टास्क सीक्वेंस का लगा हुआ है, वो इसको मिल जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, जो बूट इमेज है और जो बूट फाइल्स है ये सब चीज़ें डाउनलोड होगी, जैसे boot.vim, boot.sdi, fonts, boot mgr, sms boot, और इसके अंदर तो और कुछ नहीं होता है वैसे. अब क्या है, यहाँ पे सब हो गया है, सपोर्टिंग फाइल्स जो थी इसकी वो हो चुकी हैं. अब हम जब जैसे अब जाएंगे ना, ये बूट फाइल्स, जो ये हम बूट इमेजेस जो डाउनलोड होती है, इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड होती है, जैसे boot.vim, boot.sdi तो शायद यहाँ पे भी थी, boot.sdi यहाँ पे थी शायद, हाँ ये boot.sdi. ठीक है, और फॉन्ट्स डाउनलोड होते हैं. ठीक है, बूट mgr इसके अंदर था, ये बूट mgr फिर रन होता है, और bcd होता है एक बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस, bcd इसके अंदर boot.sdi, bcd भी होता है कहीं पे फाइल, वो सब डाउनलोड होता है. ठीक है, ये सारी फाइलें डाउनलोड होंगी जिनका नाम है boot.vim, जो मैंने फाइल्स दिखाई हैं सारी. ठीक है, boot.sdi, फॉन्ट्स, जो पेज पेज खुलता है एक टास्क सीक्वेंस का, उसके लिए फॉन्ट्स लगते हैं,
वो फ़ॉन्ट्स डाउनलोड होंगे। बूट एमजीआर मतलब बूट मैनेजर। बूट मैनेजर में पूरा प्रोसेस होता है, कब फाइल, कौन सी फाइल कब रन होगी, और एक होता है बीसीडी, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस। ठीक है, ये सारी फाइल जाती है मशीन पे, डाउनलोड होती हैं। ठीक है, बूट इमेज डाउनलोड होती है। इसके बाद नीचे दिखाता है डाउनलोडिंग बूट इमेज, फिर आता है डाउनलोडिंग बूट इमेज। ठीक है, डाउनलोडिंग बूट इमेज के बाद इसको हम बोलते हैं, जब इतना हो जाता है ना, इसको बोलते हैं प्री इंस्टॉल एनवायरनमेंट। आई मीन जब इतना हो जाता है तो मशीन को एक एनवायरनमेंट मिल चुका है वेयर इट कैन स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री इंस्टॉल एनवायरनमेंट। ये जो इतना होने के बाद दैट मीन्स हमारा आप प्री इंस्टॉल एनवायरनमेंट इज रेडी। ठीक है, एंड it's we call it also a mini OS actually, because all files are there. So it's a pre-install environment and we call it as mini OS। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे हमारे, अब ये क्या करेगा, मैनेजमेंट पॉइंट से कम्युनिकेट करेगा फॉर दिस टास्क सीक्वेंस, लिस्ट ऑफ टास्क सीक्वेंस। उसके लिए नेटवर्क ड्राइवर्स और स्टोरेज ड्राइवर्स होते हैं। स्टोरेज ड्राइवर्स पार्टीशन के लिए होता है, और जो ड्राइवर्स की हम बात कर रहे थे, नेटवर्क ड्राइवर्स ओवर द नेटवर्क होते हैं, आईपी वगैरह जिससे मिलती है, वो नेटवर्क ड्राइवर्स का काम है। स्टोरेज ड्राइवर्स बूट करते हैं। ठीक है, अभी मशीन जैसे ये सब इतना होने के बाद ना, मशीन अपने मैनेजमेंट पॉइंट को वहाँ से, उसको एक जो हमने डिप्लॉयमेंट लगाई है वो उसको मिल जाती है वहाँ से, टास्क सीक्वेंस की एक लिस्ट ऑफ टास्क सीक्वेंस वो विजिबल होती है स्क्रीन पे। वहाँ से हम टास्क सीक्वेंस चूज करते हैं और टास्क सीक्वेंस रन होना शुरू हो जाता है। तो बस एक बार टास्क सीक्वेंस की स्क्रीन आ जाए, उसके बाद पिक्सी फ्लो कंप्लीट। अब पूछो। सर पूछ रहा नहीं था, बस एक बार ये रिपीट करवाना था पूरा, मतलब वहाँ से जहाँ से उसको आईपी मिली है, बस ऐसे ही पढ़ दो आप अपनी तरह से। सबसे पहले मशीन ने ब्रॉडकास्ट किया, पोर्ट 67 पे ब्रॉडकास्ट किया विद ऑप्शन 60। ठीक है, डीएचसीपी को पता लग गया कि ये एक पिक्सी बूट रिक्वेस्ट है। ठीक है, डब्ल्यूडीएस ने भी पिक्स इसको 67 पे, बिकॉज डब्ल्यूडीएस भी सेम पोर्ट पे लिसन कर रहा है, सेम पोर्ट पे ही वर्क कर रहा है 67 पे। सो इट विल हाँ लेकिन ऑल्सो, अलग सर्वर पे है वो। हाँ वो अलग सर्वर पे है, उसने भी हम्म लिसन कर लिया कि एक पिक्सी बूट रिक्वेस्ट है। वो भी अपनी फाइल्स चेक करेगा और डीएचसीपी अपना देखेगा आईपी देना है या नहीं देना है डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट से। ठीक है, सब कुछ सही है, उसने आईपी दे दिया। आईपी देने के बाद ये एक स्टोर्ड प्रोसीजर रन होगा, एमपी अंडरस्कोर लुकअप डिवाइस। ये चेक करेगा ये मशीन स्टोर्ड है नोन उसमें, है या अननोन है। ये एससीसीएम उस वाले पे है, सर्वर पे स्टोर्ड है ये एससीसीएम, हाँ प्रोसीजर। ये स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक ठीक है। है, ये रन होगा, ये चेक करेगा मशीन नोन है या अननोन है। उसके बाद ये फाइल एक होती है wdsnbp.com, ये मशीन डाउनलोड करती है या मशीन पे जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और ये डिटेक्ट करती है उसका आर्किटेक्चर x64 या x86। फिर एक नया स्टोर्ड प्रोसीजर रन होता है गेट बूट एक्शन। वो डिप्लॉयमेंट चेक करता है, अवेलेबल है, रिक्वायर्ड है, टास्क सीक्वेंस का डिप्लॉयमेंट लगाएंगे हम। मतलब अगर जो सर अवेलेबल इसने है, डिटेक्ट कर लिया इसका टीएचसीपी पोर्ट, टीएफटीपी पोर्ट इसने 4011 डिटेक्ट कर लिया। नहीं ये कुछ डिटेक्ट नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है बताने के लिए। अच्छा, तो फिर इसको ये कैसे पता चलेगा कि मतलब इसमें 32 बिट की डालनी है या फिर ये 64 बिट वाली क्या, विंडो, इसी से तो ये डिटेक्ट ऑपरेटिंग किया ना सिस्टम। इसने। ये मशीन का जो आर्किटेक्चर है, मशीन का जो एक हार्डवेयर है वो 32 बिट है या 64 बिट है।
अच्छा, मैक्सिमम पे जाएगी, अगर 64 बिट है तो उस पे चली जाएगी, नहीं तो वो 32 पे ही रह जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर जैसे मेरा पीसीएस पे तो दोनों डलती हैं, कोई सी भी डाल लो। एक आर्किटेक्चर होता है हर हर डिवाइस का। एक डिवाइस ही 32 बिट डिवाइस होता है, कोई 64 डिवाइस होता है, 64 बिट डिवाइस अच्छा। होता है। 64 ठीक है। पे 32 बिट डाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा आर्किटेक्चर जो हार्डवेयर है वो 32 बिट है तो तुम उस पर 64 बिट विंडोज नहीं डाल सकते ना। हम्म। एक आर्किटेक्चर भी होता है, एक हार्डवेयर होता है, 32 बिट या 64 बिट। ठीक है। ठीक है, उसके बाद स्टोर्ड प्रोसीजर रन होगा, गेट बूट एक्शन अवेलेबल रिक्वायर्ड, डिप्लॉयमेंट जो लगी हुई है, अगर अवेलेबल है तो pixieboot.com फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इफ रिक्वायर्ड pixieboot.n12, फेल होता है तो अबॉर्ट पिक्सी। फिर ये सारी हम्म। फाइल डाउनलोड होंगी जो मैंने दिखाया है यहाँ से, बूट mgm boot डॉट एस डी आई बी सी डी, बूट इमेज हम्म। डाउनलोड होगी। बस फिर इतना होने के बाद मशीन को एक एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, प्री इंस्टॉल एनवायरनमेंट, मिनी ओएस, एक ओएस को इंस्टॉल करने के लिए। हम्म। बस फिर उसकी स्क्रीन आ जाती है, एक टास्क सीक्वेंस स्क्रीन आती है, वहां से हम टास्क सीक्वेंस चूज करते हैं, वहां से फिर टास्क सीक्वेंस का इंस्टॉलेशन चलता है, उसके लॉग होते हैं, मैं बताऊंगा कल। कल ये जो भी है ना, इसको वो करेंगे, डीएचसीपी बनाएंगे एक सर्वर, और हाँ। पिक्सी को इनेबल करेंगे, और कल चला के देखेंगे, एक टास्क सीक्वेंस बनाएंगे, एक डिप्लॉय करेंगे सर हम अ, ओएस। हाँ कल करेंगे डिप्लॉय ओएस, एक सर्वर बना लेना फिर बस और डोमेन ज्वाइन करा लेना उसे। ठीक है, ये तो फिर तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है भार्गव, एनी क्वेश्चन? Nothing. All good. Could you please share me this everything from beginning, I architecture, think drawing, I everything? shared the whole file, but this is new. This I have added now. Earlier, this was only the diagram, but yeah, I will share this new file. Okay, great. So if an interview is asked, just share this flow. Like I know the Pixie flow, just share it. It will be okay, sufficient. Definitely. Yeah, it's a complete flow. Now the failure part, like if Pixie is failing, machine is not getting the IP. What questions can arise now? Machine is not getting the IP. I try to boot the machine. Machine says it waits for the IP. It waits for the DHCP. Machine is not getting. So either your DHCP is not getting the, I mean, not getting the request. Okay. Yeah, Yeah, because this. machine is broadcasting, but DHCP is not responding. Maybe it is not configured properly. Machine DHCP is not getting the request. Is not reachable, right? Maybe DHCP server is not reachable, or these files are not in order. I mean, your WDS is not configured properly. In two scenarios, machine will not get the IP address. If it gets the IP address, this is stored procedure, they will not fail. These are from the SCCM side. So detection after this, it will not fail. The next failure can be at this point where your machine is unknown or known, but you haven't deployed the task sequence. Task sequence deployment should be there. If your machine is unknown, your task sequence should be deployed on unknown collection. If it is part of any collection, it's a known machine, it is part of any collection, टास्क सीक्वेंस का डिप्लॉयमेंट वहां होना चाहिए। ठीक है, डिप्लॉयमेंट पे फेल हो सकता है, आईपी पे फेल हो सकता है, और बूट इमेज नहीं डाउनलोड हो रहा है। मे बी योर बूट इमेज डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, right? We have distributed the boot image. It can fail at the point of boot image. So you have to verify that your DP have the boot images distributed where, from which DP your this pixie is working. It should be there on the DP, right? Boot image is downloaded. Now machine is running the task sequence, but it is not able to partition the
drive, because first thing it do, it partition the drive. Partition by default, these already have, boot image already have default network drivers and mass storage drivers. So network drivers and mass storage drivers help this to, achieve this IP and what to do with the IP. So by default, if there is some issue with the IP or with the, what we call, disk partition, then we have to check the network specific network drivers. By default there is, but we need specific network drivers and mass storage drivers for that particular device or model, if there is a custom boot image. Okay. I think, yeah, that's it. Net, network access account, that we will set tomorrow. Network access account should be there, because it is accessing, because machine is accessing something on the network. There is no OS, so network access account should be set. We will set it tomorrow. Yeah, previously I have mentioned while boot image file gets downloaded, some Hmm. account, this is the account, network access account got created. Yeah, it should be configured. We Mm. will do it. I It think. validates while accessing to DP. If that network access account details are not configured, so it will mismatch. It will Yeah, so not be able you are to talking about access. the network access account. Okay. Uh, yeah. Okay. Okay. Yeah, we have to So configure it. this 1234 is different from network access account, correct? Yes. Yes. This is different. Task sequence password is different. Network access account is different. Okay, okay. So whatever we configure to that DP, that 1234 will be the password for any other task sequence also. Any task We sequence. configure it. Yeah, we have to. If we choose any Okay, task sequence, we have to enter that password for 1234. Then only it will start this okay, process. okay. Okay. Yeah, perfect. So theory part is done. We will do the practical tomorrow. We'll configure one DHCP, create a task sequence, few settings. Uh, I think there's a lot of settings we need to do for PXE. Then we will be able to do it. We have to create one task sequence. We have to create one operating system image, include it in the task sequence, then deploy it, configure DHCP. We have to create one bare metal machine as well in Hyper-V, which will be simply a virtual machine without any OS. So I will Super. create one. Then we will trace the logs. As of now, there is no OS actually. So for PXE Boot, SMS PXE, we can check. Server side only, there is one log. Uh, Task sequence have SMSTS. For PXE Boot, we can check the same logs folder and SMS PXE, this one. SMS exec. SMS PXE, this one. So you can check if there is any process which is failing, right? Till PXE Boot, we can check here. For task sequence, there will be different. If there is any issue with the boot image, we can check here also. Okay.
Okay. So, um, so some particular site we are building like 10 machines. Mhm. So from smspxe.log, we'll not be able to get exact details of that particular 10 machines, right? Like in general kind of things like from server level, boot image having issues, something like that only we'll be able to find from SMSPXE. Am I right? Or Yeah, I think for particular site there is no particular, but if there is a we have different DP, I think this SMS Pixie will be generated on that DP, because right now we have DP on the primary. If there is a there is a remote DP, then that this SMS Pixie will be there on the DP itself. So from there, if there is any issue with the boot image or that, okay, we can trace it there. okay, got it, got it. So that particular site DP server, we need to log in and check Yeah, SMSPXE. yeah. We have to check there Oh, if there is some issue. okay. Okay. We have crossed almost one, so I have to start with the office thing. Go through this flow again. I will share it over the mail. I will share it. Go through it. If any Sure, question, ask. But once we do the practical, it will be much clear. Okay. sure. Yeah. Okay then. Thank you. Bye bye.